travel feast. In today's video, we are taking you to the food festival which is happening in the hotel park. And guys, there is a fireworks around 9 PM तो अभी सारे लोग जमा हुए हैं और fireworks जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं. Hi guys, अस्सलामुअलैकुम and welcome to Travel Feast जहाँ मैं सदर हम लेकर चलते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पर. आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में जो कि होटल पार्क में लगा हुआ है. तो चलते हैं और खाते हैं सब यमी फूड. लेट्स गो. Let's go! So guys, this is the 14th edition of Food Festival and it's happening in the Hotel Park which is near Cornish. This food festival is the biggest one. Around 100 local vendors are participating and 27 international vendors are participating in this. And ये चलेगा 12 February से to 22 February. So Saturday would be the last day of this festival. So guys, this festival has different sections. यहाँ पर एक section जो है वो Michelin star restaurants का भी है और एक जो है Asian है, कहीं पर cookies हैं, कहीं पर coffees हैं. So there are lots of sections and there are lots of options to eat and drink food. So guys, this festival is really very huge and there are lots of sitting arrangement और काफ़ी कुछ है यहाँ खाने के लिए कि it's getting difficult to decide what to eat. So guys, on my back side you can see the cookies and ये आप देख सकते हैं उसकी line. So all the people are waiting for the cookies and these cookies are very special. But ये है कि इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर खाने के हैं या नहीं ये तो खाकर ही पता लगेगा. So guys, what you have taken from here? For me, I took the meal 7 which is noodles and chicken shrimp. Chicken shrimps. And which is the restaurant name? Betoti. Betoti. Okay, let's see how's the taste. Hot? So fun, are you excited? Okay, try it out. Hot, be careful. How's the shrimps? Wow, enjoy. Hey guys, our koshari is here. We have ordered the koshari. Let's try it out. Some street food from Egypt. So there are so many things we need to try. Look at the quantity. Huge quantity. And these are some sauces. Bon appetit. How's the taste? Very nice. Very nice. Enjoy. And guys, this is the Turbo Market section. यहाँ पर आपको मिलेंगी सारी ऑर्गेनिक थिंग्स. तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ है. तो गाइस अफा ने यहाँ पर ट्राई किया है श्रिम्प एंड नूडल्स और हमने ट्राई की थी कोशारी. अब आगे देखते हैं कि और क्या कुछ है यहाँ खाने को.
So Fan, what you're taking from here? From the tree. Okay. Enjoy. Right. So guys, here you can find the dinner in the sky as well. This is a restaurant which you can pick up in the air by the crane और आप उसकी सीट्स जो है बुक करवा सकते हैं. There are the free flight, but ये gets a very expensive option. एक फ्लाइट जो है इसकी 599 की है and एक फ्लाइट जो है वो इसकी 299 की है. So there is the two flights and there are different prices for this. But ये है कि I don't know हवा में लटक के खाना आपको कैसा लगता है. But never experienced it. But ये है कि definitely it would be worth it or not. But हम उसे ट्राई नहीं कर रहे. अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द मिशेलिन गाइड विलेज में, जहाँ पर जाकर देखेंगे कि कौन कौन से जो है मिशेलिन स्टार शेफ जो अपनी कुकिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं. सो लेट्स गो एंड सी टू द मिशेलिन. Guys, on my back side, this is the Michelin Guide village. यहाँ पर जो है नॉर्वेजियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ग्रीस का भी है और ब्राज़ील का भी है. बट ये सारा सी फूड है एंड वी आर नॉट प्रेफर द सी फूड. सो हम यहाँ से नहीं खा रहे, जाते हैं आगे और देखते हैं कि क्या लगता है. So far, now what you are trying now? We are trying shawarma kebab. Okay, let's have some shawarma. So Atif, now what you are trying? I ordered chicken shawarma doner kebab. Okay, let's have it and enjoy. And guys, on my back side you can see from the lakes concerned. और यहाँ पे इनके पास हैं कुछ स्विस केक्स. तो चल के देखते हैं कि इनके पास कौन सी केक है. So Atif, what you are taking here? Chocolate. Okay, स्विट्जरलैंड की यादें ताज़ा हो रही हैं. So fun, give me the Swiss smile. Take a bite, Swiss bite. Reminds you of Switzerland? Enjoy. Swiss bite. You're a football player. Good. I'm a cricket player. Nice. Thank you. Welcome. And guys, this section is the fast food options. यहाँ पर सारे जो हैं बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एंड अदर ऑप्शंस हैं. तो चल के देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ है. And guys, on my back side you can see this is a Thai option. This is Shanghai Garden. So यहाँ पे different options हैं और काफ़ी कुछ है खाने को. And guys, there is a fireworks around 9 PM. तो अभी सारे लोग जमा हुए हैं और fireworks जो है वो start होने वाले हैं. So let's enjoy the fireworks. What are you waiting for? Fireworks. Really? Yes. So guys, we are waiting for the fireworks. It will happen at 9 PM. So let's wait and enjoy the fireworks.